श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 22। रुद्रादित्य वसवे च साध्या, रुद्रादित्य वसवे च साध्या, रुद्रादित्य वसवे च साध्या, विश्वेश्वनो मरुतश्चोष्मपाश्च, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, विश्वेश्वनो मरुतश्च उष्माश्च, विश्वेश्विनो मरुतश्च उपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा, 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 वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्य वसवे च साध्य, विश्वेश्वनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्य वसवे च साध्य, विश्वेश्वनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्रादित्य वसवे च साध्या, विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव इत्यादी सर्व एका भगवंताच्या समग्र रूपाचे अंग आहेत, म्हणून पाहणारे व दिसणारे सर्व एक परमात्माच आहेत. 23वा श्लोक घेऊया आता. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ एकादशोऽध्यायः. श्लोक क्रमांक 23. रूपमहत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, रूपमहत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, रूपमहत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, महाबाहो बहुबाहुरुपादं, महाबाहो बहुबाहुरुपादं, महाबाहो बहुबाहुरुपादं, रूपमहत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, महाबाहो बहुबाहुरुपादं, बहुदूरं बहुदृष्टाङ्करालं, बहुदरं बहुदृष्टाङ्करालं, बहुदरं बहुदृष्टाङ्करालं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। रूपमहत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, महाबाहो बहुबाहुरुपादं, बहुदरं बहुदृष्टाङ्करालं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। रूपमहत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, महाबाहो बहुबाहुरुपादं, बहुदरं बहुदृष्टाकरालं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। रूपमहत्ते बहुवक्त्रनेत्रं, महाबाहो बहुबाहुरुपादं, बहुदरं बहुदृष्टाकरालं, दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं। दिसणारे आणि पाहणारे, व्यथित करणारे आणि व्यथित होणारे सर्व प्राणी आणि स्वतः अर्जुन सुद्धा भगवंताच्या विराट रूपाच्या अंतर्गतच आहेत. हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः.